Yes, sir. Okay. So today we are going to continue with the C programming and the data structure aspect. I think in the previous class we understood about the stack implementation, isn't it? यस सर, आपने कहा था ऑपरेशंस ऑन स्टैक आप बताएँगे। Yeah. Uh, how many of you are able to recollect what actually stack is? If somebody asks, let's say, in an interview, you have been asked like define stack. Anyone who can recollect? I don't want a bookish definition. I just want to have an understanding that do you really understand what really stack is? सर स्टैक इज़ अ सेट ऑफ डेटा वी कैन से और ये एक कंटेनर के जैसे काम करता है या फिर एक कह सकती हूँ एक एल्गोरिदम तो नहीं, एक प्रोसेस के तौर पे ऐसे डेटा सारे एक्वायर्ड रहते हैं, जिसमें हम लोग डेटा को इनपुट भी कर सकते हैं एंड उसको डेटा को हम लोग निकाल भी सकते हैं फ्रॉम टॉप। Okay. The simplest answer that I would like to give while facing an interview is stack is a data structure. Simplest, right? आप देखो आप किस सब्जेक्ट मैटर से रिलेट कर रहे हो, उसके स्पेसिफिकली अगर हम लोग आंसर करें तो ज्यादा अच्छा है. वी शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द रियल टॉपिक जो हमें दिया गया है. So yes, that is not also a bookish definition, because bookish definition एक continuous एक sentence पूरा हो जाता. I tried to give it in 2 to 3 words, like stack is a data structure. Okay. Again, if I could extend it, we have different types of data structure, isn't it? Linear data structure, non-linear data structure. So stack belongs to which category? Stack belongs to the linear data structure category. In linear data structure category, you have the arrays, you have the linked list, you have the stack, and you have the queues. नॉन लीनियर में हमारे पास क्या आता है? ट्री एंड ग्राफ. ओके. ये डेविएशन, ये ब्रांचिंग हम लोग को पहले से एक आइडिया होना चाहिए. ओके. सो अब आगे का एक्सटेंड किया जाए कि या सो हाउ इज इट डिफरेंट एज कंपेयर टू एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर. So yes, the term that you used is that elements are inserted from the top. Uh, Stack is a data structure where elements are inserted one after the one above the other. Uh, each element, uh, each new element is inserted at the top of the below placed element, and uh, once we are done inserting the elements, if we wish to remove the elements, we remove it from the top itself. So whichever element was inserted at the last will be the first element to be removed. Last in, first out. Got it? ये terminology हम लोग अगर present कर देते हैं अपनी definition में, last in, first out, LIFO, LIFO, and that does makes relatable sense कि okay, the candidate knows what actually stack is. Okay. So a concept of top is there. Top keeps on increasing whenever we input a new data. And then again we have two more concepts. I think हम लोगों ने discuss भी किया था. That is overflow and underflow. When we try to insert a new element into a stack which is already full, and there is no space left for new element to be inserted, at that moment of time, uh, the message alert message or the message should be reflected as stack overflow. So insertion के time में हमें stack overflow मिल जाता है. Similar to that, if we try to remove an element from the stack which is already empty, so जब empty रहता है तो हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा? Stack underflow. We are trying to remove an element from the stack, but there is not a single element left in the stack to be removed. Okay, these 2 3 things are common or basic principles that one must remember. Also, I think ma'am might have shared a PDF just now that is related to queue data structure. हम लोग अभी स्टैक पढ़ रहे हैं. स्टैक का इंपॉर्टेंस है आज जो हम लोग टॉपिक कवर अप करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द डिराइवेशन और अदर द न्यूमेरिकल पार्ट. नॉट एग्जैक्टली न्यूमेरिकल, बट स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, एक एक्सप्रेशन दिया रहता है, उसको हम लोग को
स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करके चेक करना है। ओके, सो आई थिंक प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने उसका एक प्रेसिडेंस रूल एंड एसोसिएटिविटी रूल समझा था, इजंट इट? Yes, sir. है ना? Yes, sir. सो डू यू रिमेम्बर दैट एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस रूल? डू यू हैव दैट थिंग? Yes, sir. ओके, सो आई थिंक हम लोगों सिर्फ 5 ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। द हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर वाज द पावर 1, द exponent symbol. It had the highest precedence, and it was associativity, right to left. Apart from that, the second highest operator was second precedence operator was multiplication and division. Both are of same precedence level. So if an expression consists of both the expression multiplication as well as division, we follow the associativity rule. Associativity rule for these two operators is from left to right. Okay, the associativity for these two operators multiplication and division is from left to right. Similar to that, the next set of operators that we have at the same precedence level, that precedence level 3, is that plus and minus, addition and subtraction. So if we have an expression where we have both set of operators plus and minus at the same expression, then again we follow the associativity, which is again similar to the multiplication and division one. That is, it follows left to right associativity. I think यही 5 ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने बात किया था. What if brackets arrive? क्योंकि अगर ब्रैकेट्स आ जाते हैं एक्सप्रेशंस के बीच में, मल्टीपल ब्रैकेट्स आ जाते हैं, तो वहां पे क्या होगा? अगेन इफ यू सी द प्रेसिडेंस, सबसे पहले हम लोग इनफैक्ट बोर्ड मास रूल के हिसाब से हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स पे ही अटैक करते हैं. द इनर मोस्ट ब्रैकेट्स मस्ट बी रिजॉल्व फर्स्ट, एंड धीरे धीरे करके हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं. अब ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हो, लेट्स से कि सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस ऑपरेशन ही है और उसके बाद अगर एक्सपोनेंट कहीं पे आता है पावर वाला, तो आप पहले पावर को सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक आप इनर मोस्ट ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे. सो इनर मोस्ट ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन हो, प्लस माइनस एक्सपोनेंट, वहां पे प्रेसिडेंस हमारा नहीं जाता. प्रेसिडेंस सबसे पहले देखता है क्या ब्रैकेट है, इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करो. सो ब्रेक डाउन द इनर मोस्ट ब्रैकेट, then solve the other expressions and keep on doing the procedure. Okay, so with these points, I would like to start today's class. Just give me a moment. Okay, now what I will do is that we'll start with the evaluation of arithmetic expression. If you are having pen and paper, kindly note down one expression while the system is getting ready. An expression that is given is a plus b, all in capital, no? A plus b into c divided by d minus e exponent f into g. I'll repeat it once again. A plus b into c divided by d minus e exponent f into g. Now I'll write it down. Okay. Dealing with stack, inside stack we have evaluation of the arithmetic expression the given arithmetic expression is a plus b into c e exponent f into g.
ओके, सो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. सी वी डोंट नीड टू हैव द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स. हमें बस ये देखना है कि इसका सॉल्व करने का स्टेप्स क्या होगा, विच टू ऑपरेंड्स शैल बी सॉल्व फर्स्ट, विच ऑपरेटर शैल बी सॉल्व फर्स्ट, और उस तरह से प्रोसीजर को हम लोग को फॉलो करना है. ओके, सो अगेन इफ वी had the values we could have solved it through BODMAS rule or some any other mathematical rules जो हमें पता है उसके basis पे हम solve कर चुके होते. But here we are going to follow the precedence and associativity rule. Based on that we are going to follow. Now how are we going to write? Okay, अगर कभी एग्जाम में या इंटरव्यू में कोई पूछ दिया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सी, अकॉर्डिंग टू द टेबल दैट वी हैड प्रीवियसली लर्न, आई थिंक पहले कौन सा सॉल्व होगा? ई एक्सपोनेंट एफ, इजंट इट? यस सर. सरिता सही है? यस सर. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 लिख देंगे इस तरह से. दिस इज 1. नाउ we have plus, we have into, we have divide, we have minus, we have into. Okay, if we select plus, then again minus is also there, which is of the same precedence, but I cannot solve plus and minus. Why? सर उससे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पे भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है. एग्जैक्टली, हमारे पास प्लस और माइनस से हायर प्रेसिडेंस वाले भी ऑपरेटर्स अभी अवेलेबल हैं, तो उनको प्रायोरिटी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंस मिल जाएगा. जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं ना, पढ़ रहे थे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की इंपॉर्टेंस की, इस प्रोसेस को मिल जाएगा. बस वही चीज का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दिख रहा है. So we have plus, sorry, into and divide, and then again into is 2 times. So which one shall be solved first? Any idea? सर बी इंटू Whether सी. why? सर क्योंकि हमारा एसोसिएटिविटी कहता है वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Thank you, very good. So simple सा रूल है, प्रेसिडेंस पहले देखना है. प्रेसिडेंस में भी अगर सेम लेवल के आ जाते हैं तो सिंपली हैव टू फॉलो द एसोसिएटिविटी. तो लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले मिलता है क्या? इनटू मिलता है. ठीक है, तो विल सॉल्व b into c. Okay, and this is going to be number 2. Clear? Now we have b into c at 2. Then what needs to be solved? This will be solved with divided by d. 2 में जो रिजल्ट में एक्सप्रेशन आया, that will be solved with this is 3. अब और क्या सॉल्व करना है हमें? So we still have one more into. Okay, so 1 वाले एक्सप्रेशन के साथ हमें मिल गया ये g वाला, and that turns out to be expression number 4. What else is left? We have one plus symbol and we have one minus symbol. Again same level के हैं, same precedence level के हैं, so we'll follow the associativity rule. Left to right है इनका भी, so we'll solve the a plus whatever at expression 3 is. Okay, इनको solve करेंगे. So ये हो गया हमारे पास expression number 5. And finally we are left with only 5 and 4 का subtraction कर देना है. You get the result at 6. Got it? आसान है? यस सर. Okay, so if this is आसान one, then please solve this one. ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोड़ोगे. I'll give you only 2 minutes, not more than that. The given expression is, okay, I'll change the color. 2 exponent 4 plus 6 into 2 exponent 2 minus 12 divided by 4. I'll confirm it once again. It's 2 exponent 4 plus 6 into 2 exponent 2 minus 12 by 4. Okay,
इस बार तो आपको स्टेप्स भी लिखना है जैसे हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लिख रखा है, और उसको इवेल्युएट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी बताना है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल नहीं होकर कांस्टेंट टर्म्स दिया हुआ है एंड इट कैन बी सॉल्व्ड. सो टेक 2 minutes ऑफ टाइम, कम विद द आंसर. Okay, so is it done? Yes, sir. What is the answer? 37, sir. 37. Sarita? सरिता आपका क्या आंसर आया? सर आंसर नहीं आया है. क्यों, क्या इशू हो गया? सर उसमें पूरा बना नहीं है. ओके, सो ये एग्जैक्टली 37 इज द करेक्ट आंसर. देखते हैं इसको इवेल्युएट करके. ठीक है, नो कैसे होगा ये. ठीक है, सी यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले खोजना है कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर कौन सा है. वी हैव द एक्सपोनेंट ओवर हियर, एंड देखते हैं कि एक्सपोनेंट यहाँ पे भी है. 2 बार एक एक्सप्रेशन में आ गया है. एक ही रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, 2 आ गया है तो 2 बार है तो कौन सा पहले सॉल्व किया जाए. ठीक है ना, इस पे मेरा एक सिंपल सा सजेशन रहता है कि क्योंकि ये दोनों एक्सपोनेंट जो अलग अलग वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, आप इसे पहले करो या इसे पहले करो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द एक्सप्रेशन. आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ये 2 सेपरेट एंटिटीज पे काम कर रहे हैं. हाँ, अगर दोनों रिलेटेबल होते कि एक सॉल्व करने पे उसका आंसर जो है उसके साथ पावर पे सॉल्व करना है, तो वहां पे डिपेंडेंसी हम लोग को देखना पड़ता. नाउ अगेन एसोसिएटिविटी के हिसाब से एक्सपोनेंट का क्या बोलता है, राइट टू लेफ्ट, मतलब इस साइड से सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व दिस वन. 2 power 2 दैट इज 4. ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहे हैं. 2 to the power 2 दैट इज 4. अगेन अगर बाकी सारे ऑपरेटर्स को देखा है तो अगेन वी हैव वन एक्सपोनेंट लेफ्ट ओवर हियर, सो इसको भी पहले सॉल्व कर लेंगे. 2 to the power 4
2 to the power 4 gives you how much? 16. 16. तो एक्सपोनेंट तो हो गए, काम खत्म. अब हमारे पास बचा है इनटू है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है. तो अगेन विल फॉलो द सेम रूल जो प्रीवियसली फॉलो किए हैं. पहले इनटू कर लेंगे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी में. तो 6 into how much? 6 into 4. 6 into 4. 6 into 4 is how much? 24. So it will give you 24. Right? 6 into 4 gives you 24. Then what else is left? Division is left. Multiplication होगी, division is left. 12 by 4. 12 by 4 will give you 3. Right? देखो सिंबल जो जैसा है साइन है, प्लस है तो प्लस ही सही, माइनस है तो माइनस. वी आर नॉट चेंजिंग द सिंबल्स. ओके, वी आर नॉट डीलिंग विद द सिंबल्स राइट नाउ. सिंबल्स जब हम दो वेरिएबल्स या दो कांस्टेंट टर्म्स को लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो वहां उनके बीच में कौन सा सिंबल है वो वैसा ही रहेगा और उसको वैसे ही सॉल्व करना है. सो 3 आ गए, यहाँ बीच में माइनस साइन तो एक रहेगा ही. सो वी हैव 16 प्लस 24 माइनस 3. आई थिंक सो हम सही बोले. 16 प्लस 24 minus 3. 16 plus 24 gives you 40. 40 minus 3 gives you 37. Any doubt, Sarita? नो सर. ठीक है, अब सॉल्व हो पाएगा. हम्म. ठीक है, उसी तरह से एक और थर्ड एक्सप्रेशन भी यहाँ पे दिए हुए हैं फॉर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ है. काइंडली नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट. ब्रैकेट्स के साथ डील करना है. ओके, वी हैव ब्रैकेट, अगेन वी हैव ब्रैकेट a plus b ब्रैकेट क्लोज into 2 times open bracket c by d bracket close minus bracket open e exponent again bracket open f into g and all the brackets are closed down. Now you have to decide which bracket should be solved first. अगर ब्रैकेट्स नहीं होता तो मोस्ट लाइकली हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट वाले को सॉल्व कर रहे होते, बट यहाँ पे एक्सपोनेंट वाले को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे. व्हाई? ई एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट में जो वैल्यू हमको मिलेगा वो एक ब्रैकेट के अंदर है ना. ये पूरे को हम जब तक सॉल्व नहीं करते हैं तब तक हम ई एक्सपोनेंट उस वैल्यू को लिख नहीं पाएंगे. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस एक्सपोनेंट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट सॉल्व दिस वन. ये है क्या, कितना वैल्यू जनरेट कर रहा है. ये जो वैल्यू जनरेट करेगा वो ई एक्सपोनेंट में चला जाएगा और फिर वो अपना काम करके ब्रैकेट ओपन करेगा. सो आई थिंक फर्स्ट सबसे पहला जो हमारे पास होगा दैट इज f into g shall be solved first. अगेन इफ यू सी f into g जब हम सॉल्व कर ले रहे हैं उसके बाद भी एक सेट ऑफ ब्रैकेट है जो कि e एक्सपोनेंट f into g का जो रिजल्ट देगा उसके साथ आएगा. सो अगेन सबसे पहले लोग सॉल्व करेंगे f into g. जस्ट गिव अ हिंट, ये पहले सॉल्व होगा फिर उसके साथ ये सॉल्व होगा, तो these two will be solved, then this one will be solved because we are running in the same bracket set. okay, then again इनको दोनों को मिला करके सॉल्व होगा एंड तब जाकर के a प्लस बी सॉल्व करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके साथ जाकर के सॉल्व होगा. इनटू विल बी द लास्ट वन. एम आई करेक्ट? यस सर. यस ठीक है, सर. ओके फाइन. सो वैरायटीज ऑफ वैल्यूज के साथ हम लोगों ने डील कर लिया है. नेक्स्ट कम्स द नोटेशंस फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. ये जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे ये ऑन पेपर सॉल्व करने के लिए लाइकेबल है, बट we need an algorithm, we need certain set of logical expressions जिसके थ्रू सिस्टम कंप्यूटर इन एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करके रिजल्ट जनरेट कर पाए, एंड दैट टू विदाउट ब्रेकिंग द लॉज और द रूल्स ऑफ लेड डाउन बाय द मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स ने जो लॉज दिए हैं उसके बेसिस पे सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आ रहा है कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करने पे भी वही रिजल्ट आना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट करें तो रिजल्ट विल चेंज. रिजल्ट शुड रादर बी मोर एक्यूरेट. ओके, तो रिजल्ट में हमारा कहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. आप अगर इसको एक वैल्यू लेकर के सॉल्व करके देखो, जैसे हम लोगों ने देखा 37 आया, लेट असाइड द
प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, अगर आप उसको अपने मैथमेटिक्स के रूल के थ्रू भी सॉल्व करके देखोगे तो विल गेट द सेम रिजल्ट. So it's just sorry, it's just the implementation, how we are going to implement these things through computer, through languages. तो यहाँ पे क्या सोचा गया कि यहाँ पे हमारे पास जो है 3 तरह के नोटेशंस आ सकते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स. When we write an expression in this order, a plus b, जो जनरली हम लोग इक्वेशन अपना स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, जहां पे दो वैल्यूज के बीच में एक ऑपरेटर होता है और उसको सॉल्व कर देते हैं. दैट इज द इनफिक्स नोटेशन, राइट. प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले, बिफोर हैंड. प्रीफिक्स में you'll have plus ab and postfix will have ab plus. That's it. यही रूल बस हमें फॉलो करना है. बट दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स टू बी. ये तो सर आपने आसान सा बता दिया, a प्लस बी, दो ऑपरेंड है, एक ऑपरेटर है, इसमें सॉल्व करो, ठीक है. सो हमें इन एक्सप्रेशंस के साथ डील करना है और यूजिंग स्टैक, ओके, स्टैक की मदद से इन एक्सप्रेशंस को एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर अस. ओके, so let me note down some expression first. Okay, uh, let us say we have been asked okay, so let us say we have been asked to solve a given prefix expression and convert it into infix, prefix to infix. ओके, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. वी हैव बीन गिवन, प्रीफिक्स है तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इनटू प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ई एफ. ओके, इनटू प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ई एफ. फाइन. सो ये हमारा प्रीफिक्स में दिख रहा है, इजंट इट. हम लोगों ने देख लिया है कि पहले ऑपरेटर होगा, फिर ऑपरेंड्स होंगे, तो वो प्रीफिक्स में होगा. सी, इट डज नॉट मीन, जैसे एक कंफ्यूजन हमेशा स्टूडेंट्स में आ जाता है अक्सर कि सर आपने बोला प्रीफिक्स में पहले ऑपरेटर रहेगा, लेकिन यहाँ पे बी के बाद एक डिवीजन और फिर ई एफ क्यों है. सी, प्रीफिक्स का ये मतलब नहीं कि सारे के सारे ऑपरेटर्स लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और उसके बाद आप ऑपरेंड्स या कांस्टेंट टर्म्स को लिखोगे. नो, एज एंड व्हेन द एक्सप्रेशंस आर डिकोडेड, ठीक है, उनके हिसाब से ये सॉल्व होकर के ये बना है एक एक्सप्रेशन. एंड वी नीड टू फाइंड इट्स करेक्ट इनफिक्स. जब इसका इनफिक्स बनेगा तब आपको रियलाइजेशन होगा, ओके ये ऐसा दिखना चाहिए था, उसको एक प्रीफिक्स वाले ऑर्डर में लिख दिया गया था. नाउ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा कि कन्वर्ट द गिवन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनटू एन इनफिक्स यूजिंग स्टैक. ठीक है, यूजिंग स्टैक. उसके लिए बस बस दो रूल हम आप लोगों को बता रहे हैं. ठीक है, आई थिंक मे बी दूसरे बुक्स में या कहीं कहीं पे मल्टीपल रूल्स हो सकता है हो, बट आई थिंक दीज टू रूल्स आर सफिशिएंट इनफ टू well define, nicely convert a prefix into an infix. Okay, so rule 1,
First rule is very basic. Scan the expression from right to left. बेसिक से इसमें तो कुछ करना नहीं है, राइट टू लेफ्ट हमें चलना है, ठीक है। कई जगह पे लेफ्ट टू राइट, कहीं पे राइट टू लेफ्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा किसमें लेफ्ट टू राइट है, किसमें राइट टू लेफ्ट है। सेकेंड, push the operand into the stack one by one if an operator arrives pop the just push the last two operands and put the operator between them in the order A, operator B, ठीक है। ये दो रूल है, आई थिंक इससे हम लोग सफिशिएंटली अपने एक्सप्रेशन को डिकोड कर पाएंगे। लेट्स सी। तो आई वुड सजेस्ट काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हम इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे और राइट साइड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक्सप्रेशन को। इज इट डन? यस सर। हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। We have the expression, sorry, input stack, finally the output expression. Okay, this is how you are going to prepare a 3-column input, stack and expression. Now we have the expression over here, it is in prefix,
हमें इसका इनफिक्स चाहिए। पहला रूल क्या बोलता है, स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब इस ऑर्डर में हम लोग स्कैन करेंगे, इजंट इट? इस ऑर्डर में हम लोग स्कैन करेंगे। नाउ यहाँ पे ना एक्सप्रेशन में दो चीज मिलेंगी आप लोगों को। एक है ये ए बी ई एफ, ये सारे जो ये हमारे होते हैं ऑपरेंड, जो वहाँ पे रूल 2 पे लिखा हुआ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। तो ऑल द वेरिएबल्स आर नोन एज ऑपरेंड्स, और बाकी जो भी सिंबल्स रहेंगे वो हमारे ऑपरेटर्स हैं। स्टैक में हमारे पास फिलहाल सिर्फ ऑपरेटर्स जाएंगे, ऑपरेंड्स डायरेक्टली एक्सप्रेशन में चले जाएंगे। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। Okay, so first thing that we get into the input as f, we get f. Now since f is what, f is an operand, isn't it? ये operand है, तो ये stack में नहीं जा करके expression में चला जाएगा। Okay, next you have e. Okay, insert e over here. e भी क्या है, एक ऑपरेंड है, तो स्टैक में नहीं जा करके e एक्सप्रेशन में चला जाएगा। f एक्सप्रेशन में पहले से हमारे पास f था, अब उसके साइड में e लग जाएगा। Then we have what, we have division symbol. So input में division आया, division being an operator will directly get into the stack, और यहाँ पे एक्सप्रेशन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, f and e. Then we have what, we have b. Just hold on. Okay, there is one change I need to put forward over here. Actually, okay, let me just clarify. These two things are from separate entities. The rule is a different one for what we have been trying to solve. इसको विदाउट स्टैक अगर हम सॉल्व कर रहे हैं पुश पॉप के थ्रू, okay fine, see how is it going to be solved. I actually हुआ क्या कि I made a mistake. These rules are for सॉल्विंग विदाउट स्टैक, तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली जो हम जिसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं उसके बेसिस पे रहेगा। सी वी हैव टू create the diagrammatic representation of a stack. I'll make it quickly.
Okay, this is sufficient enough. See, I'll give it a sequence. This is 1, this is 2, this is 3, and this is going to be 4. Fine. Follow this expression. Okay, we have to scan from right to left. राइट टू लेफ्ट सॉल्व करने में या एक्सप्रेशन को देखने में सबसे पहले हमें कौन सा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग एन ऑपरेंड दैट इज f, so simply push it into the stack f. ओके, ये स्टैक में पुश हो गया. अगेन ये जब पुश हो गया तो अभी क्या होगा, ये सेकंड डायग्राम कैसा दिखाई देगा? f is there and top is over here. It is waiting for the next set of element to be inserted. f के बाद हमें क्या मिल रहा है एक्सप्रेशन में? We are getting e, isn't it? We are getting e. E again being an operand, it will get inserted into the stack. Okay, f then e we have. After e, look into the expression, we have division operator. So an operator arrives. So क्या rule क्या बोल रहा है? Rule 2 हमें क्या बोल रहा है? Push the operand into the stack one by one. So we have inserted f and e one by one into the stack. If an operator arrives, अभी क्या है हमारे पास? एक प्लस ऑपरेटर अराइव कर रहा है, ठीक है ना, और उससे पहले e और f हमारे पास स्टैक में थे. बट ये स्टैक अब ऐसा नहीं दिख करके वो रूल को फॉलो करेगा. रूल क्या बोल रहा है? दैट इफ एन ऑपरेटर अराइव्स, पॉप द लास्ट टू ऑपरेंड्स. पॉप का मतलब क्या होता है? टेक देम आउट. पुश का मतलब होता है इंसर्ट, एंड पॉप का मतलब होता है टू रिमूव. ओके, सो ऑपरेटर ऑपरेंड था तो पुश करते गए, एफ पुश किए, ई पुश किए, लेकिन जब ऑपरेटर मिला, एक सिंबल मिला, तो क्या बोल रहा है? उस ऑपरेटर से पहले या उस ऑपरेटर को लाने के लिए उसके पहले जो भी दो ऑपरेंड्स थे, ठीक है ना, उनको पॉप आउट करो. पॉप आउट को रिमूव करो. पुट द ऑपरेटर बिटवीन देम इन द ऑर्डर ए ऑपरेटर बी. अब ये ए ऑपरेटर बी क्या है? ठीक है ना, ए ऑपरेटर बी क्या है? लेट्स सी. आई विल जस्ट राइट इट डाउन सो दैट यू कैन गेट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग. ए ऑपरेटर बी कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें कि पहला हमारा है क्या? ई डिवाइडेड बाय डिवीजन. ई डिवाइडेड बाय एफ. अब ये ए ऑपरेटर बी जो हमारे रूल 2 में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ए ऑपरेटर बी हुआ क्या? इफ यू सी आवर फाइनल एट स्टेप 3 और स्टैक नंबर 3, ई बाई एफ, मतलब जो सबसे ऊपर टॉप के सामने जो इंसर्ट हुआ था, जो लास्टली जो इंसर्ट हुआ था, दैट इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट वैल्यू, और उसके नीचे जो एलिमेंट था दैट इज गोइंग टू बी द सेकेंड वैल्यू. दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिटन ई बाई एफ. अदरवाइज क्या होगा, स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि पहले f इंसर्ट हुआ तो पहले f को मिलना चाहिए प्रायोरिटी, तो f डिवाइडेड बाय e होना चाहिए, बट इट्स नॉट, रादर इट्स द अदर वे राउंड, कि पहले लास्टली जो इंसर्ट हुआ, लीफो फॉलो करें ना हम लोग स्टैक में, तो लास्ट इन जो हुआ था वो पहले निकलेगा, तो दैट्स व्हाई e पहले आया, देन द सिंबल, एंड देन द लास्ट वन दैट इज f, e बाय f. तो ये a ऑपरेटर b जो है रेफरेंस के लिए आपको दिया गया है, दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. So finally, we have moved from 1 to stack number 2, और stack number 2 में जब हमें एक operator मिला, तो we move to stack number 3 in this order. यहाँ तक कोई doubt है? No, sir. Clear. Okay. Then what is next in the input? We have B, right? B. तो B तो खुद एक क्या है? Operand है. तो उसको हम लोग क्या करेंगे? Insert कर देंगे. I'll do it in this B. B के बाद हमें क्या मिल रहा है? Again A, being an operand, it will again get inserted A.
आफ्टर ए वी हैव द प्लस सिंबल। अब अगर हम प्लस सिंबल को इंसर्ट कर रहे हैं, प्लस सिंबल, ठीक है, तो वही रूल फॉलो होगा जो ई बाई एफ के लिए हुआ था। इसका मतलब है हमें अब जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ई बाई एफ, ठीक है, ये इधर था, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बाई बी, सॉरी ए प्लस बी। वी हैव द एक्सप्रेशन इन दिस मैनर, राइट। फाइनली हमें फिर क्या मिल रहा है, स्टार सिंबल, मल्टीप्लीकेशन सिंबल वी आर गेटिंग, मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो अब मल्टीप्लीकेशन मिल गया, बट हमारे पास क्या है, उसके नीचे अगर देखा जाए टू सेट ऑफ एक्सप्रेशन आर देयर, ए प्लस बी एंड ई बाई एफ। आपको सिंपली बस ये काम करना है, आप इसको अगर सिर्फ एक ब्रैकेट में कंसीडर कर लो, okay, this is one bracket and this is another set of bracket। अगर हम इसको जैसे ही ब्रैकेट में डालते हैं तो a प्लस बी कैन बी सीन एज अ सिंगल वैल्यू एंड e बाई एफ कैन बी ऑल्सो सीन एज अ सिंगल वैल्यू। तो ये दो सिंगल वैल्यूज के साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सेम रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट, दैट इज a प्लस बी इंटू इंटू e बाई एफ। दिस इज द फाइनल इनफिक्स एक्सप्रेशन दैट वी हैव अचीव्ड। इनफिक्स जैसा दिख रहा है, हर ऑपरेटर से पहले और बाद में ऑपरेंड, या हर दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज द फाइनल, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट वी हैव रिसीव्ड। इज इट क्लियर, एनी डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, तो इसी रूल को फॉलो करके आप कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, आप इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में इससे डिफिकल्ट यूजिंग स्टैक पूछा जाएगा, ये तो सिंपल सा एक्सप्रेशन को कन्वर्जन था, ये दो रूल पे हम लोगों ने बना दिया। एक इसी का एक और नोटेशन आता है, बिकॉज ये तो मैथमेटिकली या लॉजिकली नहीं था, हम लोगों ने बस एक रूल बनाया, रूल को फॉलो कर रहे हैं, बट अगर इससे भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स अगर हमें मिल जाते हैं, एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। और अगेन क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि सॉल्व दिस या कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम प्रीफिक्स टू इनफिक्स या पोस्टफिक्स टू इनफिक्स या सम अदर वे यूजिंग स्टैक। तो उसका एक रूल है, ये रूल जैसे हमारे पास था, ये था प्रीफिक्स टू इनफिक्स का, सिमिलर टू दैट, जस्ट होल्ड ऑन। Okay, similar to that, we have postfix to infix. Okay, postfix to infix. Let us suppose an expression is given in this order. AB plus EF divided by into. आई थिंक ये भी वही एक्सप्रेशन है, ए बी एंड ई एफ उसी को लिया गया है, एंड प्लस इनटू डिवीजन, हाँ सेम सेम एक्सप्रेशन है, इस बार पोस्टफिक्स ऑर्डर में लिखा है, इसका इनफिक्स मांग रहा है। तो अगर हम लोग करेक्ट रूल फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट दैट वी हैव रिसीव्ड ओवर हियर, इजंट इट। यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला अभी, वही रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल भी हम लिख दे रहे हैं, देन विल वाइंड अप द सेशन।
Rule 1 states that push the operand into the stack. Into the stack. If an operator arrives, then simply pop the last two. शायद यही रूल उधर भी चला था. The last two operands and add the operator between them in the order B operator A. इसमें इस बार क्या है, ऑपरेटर्स का सीक्वेंस जो है वो चेंज कर दिया गया है बी ऑपरेटर ए. प्रीवियस वाले में क्या था, ए ऑपरेटर बी था. ओके, so same expression को I'll leave it as your task, as your homework. You try to solve it using the given two rules. Let us see how many of you are able to have an understanding. See, आपके पास आंसर पहले से है, हम लोगों ने जब प्रीफिक्स टू इनफिक्स किया तो यू गॉट द एक्सप्रेशन. तो यू नो कि इसको सॉल्व करने से हमें इनफिक्स कैसा मिलना चाहिए, a प्लस बी इंटू ई बाई एफ. आपको बस ये रूल पे बैठा करके देखना है सेट करके कि क्या जो रूल हमें दिया गया है ये जस्टिफाई कर रहा है, या रूल के बेसिस पे हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है या नहीं. ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में लोग कंटिन्यू करेंगे और इसका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख लेंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस बस वो है कि इसमें राइट टू लेफ्ट हम लोग स्टैक में डाल रहे थे, तो इसमें कैसे जाना है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? इसमें वैसे ही लेफ्ट टू राइट हम लोग चलेंगे. लेफ्ट टू राइट. Left. हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है, सर. लेफ्ट टू राइट चलेंगे इसमें. ठीक है, अगर राइट टू लेफ्ट भी चलते तो यहाँ पे पहले हमें ऑपरेटर मिल जाता. तो रूल हमेशा बोलता है यस, कि पहले ऑपरेंड मिलना चाहिए, आपको एक सेट ऑफ ऑपरेंड्स मिलना चाहिए, तभी ना आप ऑपरेटर उस पर इम्प्लीमेंट कर पाओगे. ऑपरेटर. हमें हमेशा यस सर. हमें हमेशा दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर को फिक्स करना है. ठीक है, उस हिसाब से प्लेसमेंट होगा. ओके, Yes, sir. सो वी शैल कंक्लूड इन दिस फेज इटसेल्फ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. ओके जी सर. ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय. थैंक यू सर. Thank you, sir.